Hello everyone and very good morning everyone. Welcome you all to Ada 24/7 Odia YouTube channel. समस्त को आड़ा ओडिया को समस्त को स्वागतम पिला माने. तो आमे माने डिस्कशन करछे पिला माने आपण मानकर SSB TGT रो पेडागोजी रो मॉक टेस्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 10 मॉक टेस्ट. आज आपण 11 मॉक टेस्ट हम डिस्कशन करबे. 10 मॉक टेस्ट मींस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अराउंड 250 क्वेश्चंस. ओके तो समस्ते ये सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिंतु. देन विल स्टार्ट आवर सेशन. ठीक है पिला माने वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. भल अच्छे पिला समस्त ठीक ठाक अच्छो रेडी प्रिपरेशन ठीक ठाक चलची भल अच्छो. चलो आप छुटिया थर्ड ऑफ द डे मो तरफ गोटे डोंट स्पेंड टाइम बीटिंग ऑन ए वॉल. Don't spend time beating on a wall, hoping to transform it into a door. जो जिनस हम ना जो जिनस आम अख्तियार बाहर सीटी आम परिश्रम करने अपेक्षा जो जिनसा आम पारिबा आम करें तापर गुरुत्व देवा उचित. ठीक अच्छे वेरी गुड मॉर्निंग प्रणाम. Oh, thank you so much. मैंने पिले माने लास्ट होमवर्क रो आंसर करिबा ता सहित मॉक टेस्ट नंबर 11 आज डिस्कशन करिबा. आ होमवर्क मध्ये आपन लास्ट को अछि. ठीक अछि होमवर्क रो आंसर जो पिले माने दैछन्ती से मानक ना भी मु अनाउंस करिबी. आज कमेंट मेंशन करनी थी मोबाइल देखि देबा. एटा थिला आपन मानकर लास्ट होमवर्क. क्वेश्चन थिला जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. आ भितर को स्टेटमेंट ता ट्रू आपनकर अटे. इन असेसमेंट आज लर्निंग द लर्नर्स हैव देयर ओन गोल्स. असेसमेंट आज लर्निंग माने जेडो को मैं सेल्फ असेसमेंट बोल को सेल्फ असेसमेंट रे लर्नर हैज देयर ओन गोल्स ओन रिफ्लेक्शन. एटा ठीक अछि. द लर्नर हिमसेल्फ और हरसेल्फ initiates the assessment process. हे परियो एटा बदे लर्नर निजे असेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट करि परियो. व्हाई नॉट यदि सेल असेसमेंट आज लर्निंग कथा कहबा ए जे कोन से असेसमेंट प्रोसेस हो इन लर्नर्स कैन आल्सो इनिशिएट देयर असेसमेंट प्रोसेस. हे परियो so this one is true also, this two is true, both I and double I and true. The answer is C. बहुत सारा पिला माने आंसर देछन. समस्त ना कमेंट और स्क्रीनशॉट तो मु रखियो पॉसिबल हेनी. ढेर सारा पिला आंसर देछन. लक्ष्मी प्रिया, कृष्णा, दीपक, झांसी, राजेश, मधु, राकेश, पुष्पा, ज्योतिर्मयी, अनिल, सोनी, प्रियंका, अजित, शुभश्री, महेंद्र, निकुंजस. कितना पिला भूल मत कहते. यस जयंती, जयश्री, मधुस्मिता समस्त पिला ढेर सारा धन्यवाद. थैंक यू. क्वेश्चन आंसर दौस पार्टिसिपेट कर. ठीक अच्छे समस्त बहुत सारा धन्यवाद. यस रेडी जीवा स्टार्ट करिया मॉक टेस्ट नंबर 11. ऑल ऑफ यू रेडी समस्त रेडी पिला माने सेशन को लाइक एंड शेयर कर दियंतु पिला माने. एवरीबॉडी गोटे लाइक गोटे शेयर कर दियो. रेडी बोली मेंशन कर दियो. Then we will start our session. Done. चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपण मानक स्क्रीन रे आपण मानक पाई. क्वेश्चन नंबर 1 the readiness for a child's learning is determined by TGT exam expected date. ए इलेक्शन डेट ता डिक्लेयर होला परे से अनुसार से डिसाइड करिवे. एक एग्जाम कंडक्ट करिया पई तो घर दरकार एग्जाम कंडक्ट करने ऑफिशियल दरकार
टीचर दरकार रिक्रुटमेंट ऑफिसर दरकार समस्त तो इलेक्शन ड्यूटी जब पलैबे एग्जाम कर किए हम कौटी से इलेक्शन डेट को अपेक्षा कराई इलेक्शन डेट डिक्लेयर दे विल डिक्लेयर इट द रेडीनेस ऑफ ए चाइल्ड लर्निंग डिटरमिन बाय रेडीनेस टा सब क्या मैटर कर ऑलरेडी लास्ट क्लास भी कहते रेडीनेस मैचुरेशन पर डिपेंड करे रेडीनेस क्या डिपेंड करे मैचुरेशन पर मैचुरेशन कहले आपन को जे एज एप्रोप्रिएट बिहेवियर मन गोटे 5 वर्षिया छुआ ताकू तो आलजेब्रा पढ़ी पारिबो नाही बिकॉज 5 वर्षिया पिलाटे आलजेब्रा पढ़िया पे मेंटली ही और शी इज नॉट रेडी मेंटली सी रेडी नहीं ओके बुझे ना नहीं ठीक अच्छे तो आंसर इज डी मैचुरेशन क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ंतु टाइमर इज ऑन क्वेश्चन ऑप्शन सहित ऑप्शन गुड़ा पढ़ंतु ठीक से सहित आंसर देवाई चेष्टा करूँ which of the following statement regarding intrinsic motivation is true intrinsic motivation regarding co statement are true it does not require any prior knowledge intrinsic motivation रे कौन प्रकार prior knowledge आवश्यकता न थाए reinforcer drives an individual's behavior towards a goal reinforcer जदि इंडिविजुअल को ड्राइव करछि सर एटा तो एक्सटर्नल reinforce एटा तो एक्सटर्नल मोटिवेशन ना if reinforcer drives an individual that is external motivation rewards are used to achieve goals सर जदि हमें रिवार्ड अप्लाई करछे एटा तो एक्सटर्नल मोटिवेशन पछे इंट्रिंसिक मोटिवेशन काहे की बाबद को स्टेटमेंट ट्रू इज मोर इंपोर्टेंट देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दीटा दरकार बट फॉर बिगेस्ट सक्सेस इन लाइफ यू नीड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन सॉरी इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज मोर इंपोर्टेंट देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आंसर जो मैंने डी क्वेश्चन डी इज करेक्ट वेरी गुड डी क्वेश्चन नंबर 3 प्रणाम समस्त को जय जगन्नाथ देखो क्वेश्चन नंबर 3 an assessment that takes place after the learning has been completed and provides information and feedback that sums the teaching and learning process is a dash diagnostic assessment formative assessment summative assessment prognostic assessment formative के पढ़ी आंसर दियो an assessment that takes place after the learning has been completed and provides information and feedback that sums the teaching and learning process is a dash समझ formative कह दो लिखा है after the learning process has been completed information दिए that sum of the teaching learning process overall teaching learning process कौन थिला कौन रहिला वर्ड में मेंशन है सम अप अच्छी पुणी आफ्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मेंशन है अच्छी खाली लर्निंग प्रोसेस देखिकी ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देखिकी तुम समेटिव कह दो फॉर्मेटिव कह दो हाँ सब जगह पढ़न कहीं कर छुआड़ा आंसर समेटिव इवैल्यूएशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लास्ट को इनफॉरमेशन दिया हो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस केमी थिला कौन थिला यस बुझला फीडबैक देख लो फीडबैक केतले दिया होची when that provides feedback when that sum of the teaching learning process sum of माने at the end of the teaching learning process at the end of the teaching learning process then summative हो sum of माने overall माने इठि मेंशन कराई छी assessment that takes place after the teaching learning process is completed माने कोन से सुकु completed माने कोन को हाँ खाली गोटे फीडबैक देखी फीडबैक समेटिव असेसमेंट कौन फीडबैक दिया जाए कि हाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट फीडबैक इमीडिएट फीडबैक दिया जाए समेटिव असेसमेंट रे लास्ट को फीडबैक दिया जाए
ठीक। क्वेश्चन है तो इंस्ट्रक्शनल एंड कहनी कौन लिखा है आफ्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड अर्थ कौन आफ्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड अर्थ कौन खाली कौन एंड वर्ड लिखा है it provides information about the sum of the teaching learning process overall कौन घटला टीचिंग लर्निंग प्रोसेस केते दूर आगेला टीचिंग लर्निंग प्रोसेस केते सक्सेसफुल है जाना पे जो लास्ट को फीडबैक दिया हो सेटा कौन ओके ठीक होगा सिंपल क्वेश्चन टा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ंतु अटेंशन आंसर द पेन चेष्टा करूँ अटेंशन स्पान of which of the following group of students is less middle school students preschool students secondary students higher secondary students attention span of which of the following group of students is less who age group पिला मानकर attention span बहुत कम attention span basically आपनकर कम था प्री स्कूल स्टूडेंट्स को सर प्री स्कूल स्टूडेंट्स माने जोड़ा आपनकर प्री प्राइमरी एज रे जानती प्री प्राइमरी एज बेटा आपनकर अर्ली चाइल्डहुड रे जानती ए 2-6 वर्ष पिला मानकर 2 to 6 years students attention span of these students is comparatively low in comparison to others yes very good जन भी अच्छा सेशन में समझ सेशन गोटे लाइक कर दे पे लाइक गोटे कर शेयर गोटे कर दियो ठीक चलो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत कष्ट का क्वेश्चन टा स्कैफोल्डिंग वाज डेवलप्ड बाय वाइगोट्स्की कालोजर्स पियाजेट पावलोव स्कैफोल्डिंग वाज डेवलप्ड बाय वाइगोट्स्की द scaffolding term first used in psychology like first used in psychology by scaffolding term को first psychology रे use करथिले के who used the term scaffolding for the first time who used the term scaffolding for the first time वेरी गुड आरपी स्माइल बहुत बढ़िया ब्रूनर फास्ट यूज्ड स्कैफोल्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम चलो क्वेश्चन नंबर 6 एडजस्टमेंट टू ए न्यू एनवायरनमेंट इज नोन एज डैश एडजस्टमेंट टू ए न्यू एनवायरनमेंट को आम कौन कहू एसिमिलेशन अकोमोडेशन एडाप्टेशन acquisition adjustment to a new environment is known as dash assimilation accommodation adaptation वो थियोरी को डेवलपर करना आनंतु आओ आनिबा कॉलेज अडाप्टेशन गोटे न्यू एनवायरनमेंट सहित एडजस्ट करी चलिबा न्यू एनवायरनमेंट सहित एडजस्ट करी चलिया पई आपन दुईटा प्रोसेस दरकार एसिमिलेशन अकोमोडेशन कॉम्बिनेशन होची अडाप्टेशन यस दिस अडाप्टेशन को आजे सिंपली कथा जने झियोटे जले बाहाई कि शाशुघर को जाउची प्रथम से बाप घर स्वाधीनता शाशुघर खोजिया पे चेष्टा करूची बहुत सारा जिनस भूलभाल होची गाड़ी खाउची एसिमिलेशन करिया पे चेष्टा करूची तले प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंस टा को हम प्रेजेंट रे अप्लाई करिया पे चेष्टा कर ताको एसिमिलेशन को आजे भूलभाल होची भूलभाल हैला पर ताको बहुत सारा नुवा नुवा कथा सिखिया पड़ुची ना इठी मो बाप घर ओले 8टा 9टा पर्यंत गुणी बाड़ी सोई पड़िबे नै मते सकाळ उठिया पड़िबो मते घर काम करिया पड़िबो मते समस्त मुंडिया मारिया पड़िबो केते सारा कथा धीरे 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 नुआ नुआ जिन छोड़ा से एडजस्ट करुचे ताको अकोमोडेशन कहा जाए टाइम लगुच वर्ष 2 वर्ष पर शाशुघर को पूरा अडप्ट कर नौ नुआ एनवायरनमेंट सहित निजक खाप खुआई चल नौ अडाप्टेशन कहा जाए यस एसिमिलेशन अकोमोडेशन और कॉम्बिनेशन हूँ अडाप्टेशन कौन नुआ परिवेश सहित खाप खुआई चलने को आम
adaptation ही कह जाए adaptation ही कहि परिया डन चलो क्वेश्चन नंबर 7 7 आपण मान स्क्रीन रे real life नहीं problem solving engages learners in dash problem solving engages learners in dash investigations failure disappointments irritations problem solving engage learners in dash problem solving approach जार फाउंडर हमें कहते जॉन डीवे प्रॉब्लम सॉल्विंग रे जब पिला को कौन से गोटे रियल लाइफ प्रॉब्लम दिया जाए पिला को हिंट दिया जाए सॉल्यूशन दिया जाए नहीं पिला निजे निजे इंक्वायरी करे निजे निजे इन्वेस्टिगेट करे फाइंडिंग सॉल्यूशन यस तो ये फेल्युअर डिसअपॉइंटमेंट्स इरिटेशन नेगेटिव वर्ड तीन जाक तो आंसर ए हम इन्वेस्टिगेशन वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 8 8 क्वेश्चन मोर देन 96 लर्नर्स आर देयर समझे गोटे सेशन को लाइक कर दे पे एवरीबॉडी assessment that are constructed by an individual teacher or a group of teachers in order to measure the outcome of classroom instructions are known as dash assessment that are constructed by an individual teacher hontu kimba group of teacher ho in order to measure the outcome of classroom instructions are known as dash standardized tests are conducted achievement test teacher made test na self evaluation test what does it called teacher made test how it लिखा है देखो assessment that are constructed by an individual teacher हो कि group of teacher हो in order to measure the outcome of the classroom रो outcome classroom instruction outcome को measure करिया पे teacher जो परीक्षा करंती particular गोटे classroom रो overall जितने all over ह्यूज पॉपुलेशन ऊपर ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माने जो टेस्ट दियन सेटा को स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोली को स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट माने क्वेश्चन तैयारी करंती ओके ताको हम टीचर मेड टेस्ट कहि परिबा बा सेल्फ मेड टेस्ट कहि परिबा सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट नहीं अलग कथा सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट माने एटा आपण कहि परिबे जो स्टूडेंट निजे निजे इवैल्यूएशन करछ सेटा सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट बोली कहि परिबे टीचर मेड टेस्ट बा नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट को कह जाय ताको अदरवाइज कोन कह जाय नॉन स्टैंडर्डाइज तो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज फ्लेक्सिबल नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर टीचर से पर्टिकुलर से क्लास रो पिला मानन ऊपर टेस्ट करछि पिला मानन टाइम अनुसार टाइम चेंज कर दे परिबे नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज फ्लेक्सिबल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर रिजिड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज फ्लेक्सिबल यस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्वेश्चन इज बीइंग मेड बाय द एक्सपर्ट ये केते पिला परीक्षा दियंती बहुत संख्या छुआ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज डन ऑन ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टीचर मेड टेस्ट जस्ट लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर क्लास पर्टिकुलर स्कूल बा पर्टिकुलर क्लास सहित लिमिटेड एथरे कंपैरिजन अछि कंपैरिजन न थाय प्राय तेरे रैंक ग्रेड फेड एथरे स्टैंडर्डाइज रे जाए एथरे न थाय यस वेरी गुड तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर करूँ वी इग्नोर द इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टैंडर्डाइज टेस्ट टीचर मेड टेस्ट इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर करा जाए ना टीचर जानी ये पिलार होनी रिटन टेस्ट होनी से ओराल देदेव हाँ लास्ट चैप्टर पढ़ाएनी आम क्वेश्चन पकेबू ना बोर्ड कौन से कथा बुझे टीचर थे न था लास्ट चैप्टर पढ़ा न हो क्वेश्चन आसो यस तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट इग्नोर्स द इंडिविजुअल डिफरेंस फॉर स्टैंडर्डाइज टेस्ट टीचर मेड टेस्ट आपणकर इंडिविजुअल डिफरेंस को एड्रेस करे इट इज बेटर देन दिस क्वेश्चन नंबर 9 one of the disadvantage of self assessment is very demanding for the teacher, does not allow for diagnosis, increases students effort, discourages learning.
one of the disadvantage of self assessment is self assessment रो disadvantage कौन है पारे payment is standardized what is the right answer right answer is very demanding for the teacher self assessment teacher पे बहुत demanding it does not allow for diagnosis allow करे increase student effort increase करूँ माने एटा student effort increase करूँ advantage तार learning को discourage काहे करियो learning self assessment learning को encourage करियो discourage काहे करियो learning को discourage करिवार किसी संपर्क अछि कि self assessment रो learning रो discourage सहित किसी संपर्क अछि कि नहीं ना it's very demanding for the teacher self assessment पिला निजे निजे को assess करूची पिला जदी निजे निजे को assess करूची बहुत सारा fault निजे पिला अरे self assessment can discourage the learning is there any possibility that self assessment can discourage learning किसी possibility अछि कि possibility नहीं तो भाबिया कौन पे किसी ऑप्शन से तार संपर्क ही किसी नहीं हाँ मुझे निजे निजे को assess करूची मु मोर दोष दुर्बलता बहुत फाइंड आउट करी टीचर ऊपर अधिक प्रेशर आसो टीचर ऊपर अधिक प्रेशर आसो टीचर जाना पूर्व ता ऊपर अधिक प्रेशर आसो सेल्फ असेसमेंट बहुत डिमांडिंग है जे टीचर मानक पे बहुत डिमांड है जे टीचर मानक पे यस आंसर है स्टूडेंट एफर्ट को जदी बढ़ाउची एटा तार एडवांटेज डिसएडवांटेज तो कथा भी नहीं more than 95 learners are there समते गोटे सेशन को लाइक कर दे पिला माने जे जण असो गोटे तो लाइक कर दियो क्वेश्चन नंबर 10 which of the following process starts from the very beginning which of the following process starts from the very beginning of designing instructions and continues till the end of the course or instructions कौन कहबा हमें वेरी गुड फॉर्मेटिव हो तुम एंड देखी देखी समझ मार दबनी क्वेश्चन पढ़ो गोटे गोटे वर्ड देखी जो फॉर्मेट समझ मार दो भूल हम देखिए which of the following process starts from the beginning रू आरंभ हुए इंस्ट्रक्शन मध्य चले शेष पर्यटन चले आरंभ शेष पर्यटन जोटा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सहित कंटिन्यूअसली चले दैट इज फॉर्मेटिव सो फॉर्मेटिव इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आंसर फॉर्मेटिव बॉडी हम क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड मैन आउट भर कोटा ऑड मैन आउट अटे चार्टा भर कोटा ऑड मैन आउट कोटा अलग अटे portfolio review state assessment end of unit or chapter test homework which of the following is odd man out homework portfolio review state assessment end of chapter test गुड़ा को सब कहा द्वारा करा जाए एगुड़ा सब टीचर द्वारा करा जाए होमवर्कटा करे किए स्टूडेंट करे यस होमवर्क इज ए पार्ट ऑफ होमवर्क रे हमें पिला को मार्क ग्रेड रैंक देबनी इठी पिला को मार्क ग्रेड रैंक हमें दे परिया इठी पिला को मार्क ग्रेड रैंक दे परियो होमवर्क दे परियो नै अलगा छाड़ दियो क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द ऑड मैन आउट ऑड मैन आउट करो ब्रेनस्टॉर्मिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इंक्वायरी अप्रोच डिस्कशन मेथड व्हिच वन इज ऑड मैन आउट ब्रेनस्टॉर्मिंग कोऑपरेटिव लर्निंग
inquiry approach, discussion method. Find the odd man out. Answer is C. Brainstorming can be given in group, cooperative group, discussion group. Inquiry individual दिया जाई परिबो बा group रे दिया जाई परिबो. It can be done in individual or group. एथरे सबले group involvement थाए. Option C can be done in individual, can be done in group. Discussion individual ही परिबोनी, brainstorming individual कर जाई परिबोनी, cooperative individual कर जाई परिबोनी. 1 A B D ए तीनटा जाक ग्रुप लर्निंग एक्टिविटीज. सी इज इंडिविजुअल लर्निंग एक्टिविटीज. ग्रुप लर्निंग इंडिविजुअल लर्निंग गोटे पार्ट तो तुम अच्छी. यस ए बी डी आर ग्रुप लर्निंग एक्टिविटीज. सी इज द इंडिविजुअल लर्निंग एक्टिविटीज. क्वेश्चन नंबर 13. आउट ऑफ द फॉलोइंग which one is included in Henry Murray's theory of motivation? अच्छा हेनरी मुरे को theory of motivation रे आ इधर कोटा को include करा जाइछि. achievement needs, psychogenic needs, self actualization needs, aesthetic needs. हेनरी मुरे theory of motivation अन जदि कहबो न छाड़ दबो सब. एटा psychogenic need तांकर अछि जो self actualization need, aesthetic needs ये दीटा मास्लो थ्योरी अच्छे. साइकोजेनिक नीड्स माने साइकोलॉजिकल नीड्स. मनुष्यर साइकोलॉजिकल नीड्स सबुठ बहुत इंपोर्टेंट. साइकोलॉजिकल नीड्स रे जो मोटिवेशन गुड़ा जाए, मोटिवेशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन ये गुड़ा सब जाए. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following did Vygotsky propose? कोटा Vygotsky आ भितर कहि छंती. Relationship between language and thought, relationship between language and speech, relationship between thought and speech, relationship between language and learning. Which of the following did Vygotsky propose? Which of the following did Vygotsky propose? Vygotsky proposed the relationship between language and thought. Vygotsky कहछन्ती जेतल इनिशियल स्टेज रे पिला जेतल पाखापाखि गोटे वर्षिया छुआ थाए तार लैंग्वेज आउ थॉट एमान भितर संपर्क ही किछि न थाए. वर्षिका छुआटे 1.5 वर्षिया छुआटे पिला कोन भाबी चिंती कथावार्ता कहे करे ना कहला परे भाबे तार भावना कहया भितर कि संपर्क ही न थाए. पाखापाखि पिला जेतल 3 वर्ष आडी कि हुए तार लैंग्वेज आउ थॉट परस्पर को मर्ज करंती. हाँ कहला बेलू भावे, भाविला बेले कहे, टिके कहवा भावना भितर सामंजस्य आसे. धीरे धीरे बड़ हवा परे पिलार लैंग्वेज ही ता थॉट को डिटरमाइन करे. कह जाउ Vygotsky कहले लैंग्वेज डिटरमाइन द थॉट प्रोसेस. लैंग्वेज डिटरमाइन्स द थॉट प्रोसेस. जाको आ गोटे लाइन ने बुझिबा लैंग्वेज थॉट प्रोसेस पूर्व आछि. थॉट इज लैग बिहाइंड, थॉट लैग्स बिहाइंड लैंग्वेज. लैग्स बिहाइंड लैंग्वेज माने लैंग्वेज परे थॉट आछि. लैंग्वेज परे थॉट आछि. थॉट लैग्स बिहाइंड लैंग्वेज. यस बुझला. चलो क्वेश्चन नंबर 15 फॉर यू. Which of the following is a fundamental component in formative assessment? Formative assessment रे fundamental component आ भितर कोटा. Perspective or propaganda, sample set ना feedback. Formative assessment रो fundamental component कोटा. Which one is the fundamental component? Fundamental component हो जे आपनकर feedback. Sample set माने sample question. Propaganda
न थाई पर्सपेक्टिव अलग जिनस फॉर्मेटिव असेसमेंट रे फीडबैक टा इंपोर्टेंट बिकॉज फीडबैक आम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन दो जिते आम फीडबैक दबा ता द्वारा टीचिंग लर्निंग दीटा जाक प्रोसेस रो कौन हम इम्प्रूवमेंट हम आंसर डी आंसर इज डी वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑन पढ़ो आंसर दबा चेष्टा करूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस require cognitive skills and knowledge higher order thinking skill questions by HOTS objective type detection type read and repeat को प्रकार क्वेश्चन रे cognitive skill दरकार knowledge भी दरकार higher order thinking skills objective type detection type read and repeat आंसर कौन हम आंसर हो higher order thinking skills अच्छा जो cognitive skill अच्छी कॉग्निटिव स्किल कहले आपनकर एनालिसिस सिंथेसिस अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन इवैल्यूएशन कॉग्निटिव स्किल जेटा ब्लूम्स कहचंती जे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल दरकार ऑब्जेक्टिव भी दरकार डिटेक्शन माने डिटेक्शन टाइप ने मु डाकी भी तुम लिखि दबो रीड एंड रिपीट पढ़िबो रिपीट करियो एथरे कॉग्निशन रा आवश्यकता बहुत कम था ए दिना तो काट दे बी खराब ऑप्शन ने एटा बेटर ऑप्शन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल गुडा को मनुष्य जेते हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल गुडा कोडा प्राय जो कुछ एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन ऑल दीज आर हायर कॉग्निटिव स्किल्स ओके बुझी परछ बेला माने क्वेश्चन आंसर जा होची हम तो सेशन को लाइक कर दे बेला एवरीबॉडी अच्छा मोर देन 90 लर्नर्स आर देयर गोटे तो लाइक कर दिया भल लगुनी बुझी परन Question number 17. Students from several races, cultures, linguistic background in a classroom constitute classroom diversity, heterogeneity, multidisciplinary, spontaneous. कौन आपको कहेगा Students from several races भिन्न भिन्न रेस भिन्न भिन्न जातिर आसता पिला माने भिन्न भिन्न कल्चर भिन्न भिन्न लैंग्वेज आसता पिला माने एटा क्लासरूम रो कोडा प्रमोट करंती सर मल्टी डिसिप्लिनरी माने मल्टीपल सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट कथा पड़ी स्पॉन्टेनियस तो नुह दिस इज कॉल्ड एज क्लासरूम डाइवर्सिटी आको क्लासरूम डाइवर्सिटी बा क्लासरूम विविधता बोली कहै छै दिस इज कॉल्ड एज क्लासरूम डाइवर्सिटी यस हां वेरी गुड 18 आंसर कर पिला माने विदुटी which of the following is a serious problem that can be मना करा heterogeneity is a part of classroom diversity बड़ वर्ड ता भीतर heterogeneity तार गोटे पार्ट कहि परिबा हां यस which of the following is a serious problem that can affect the learning and emotional growth amongst the children कोडा गोटे सीरियस प्रॉब्लम माने अभी तो कोडा गोटे प्रॉब्लम जेटा पिलार लर्निंग और इमोशनल ग्रोथ को अफेक्ट करे को करिकुलर एक्टिविटीज लर्निंग और इमोशनल ग्रोथ को फोस्टर करे बढ़ाए क्लास रे डिबेट हेले बढ़े हम जे प्रॉपर्टी यूज करछे विभिन्न प्रकार प्रॉपर्टीज यूजिंग प्रॉप्स कहले हमें कहबा कोन टीएलएम कहि परिबा गोटे बुलिंग जो करंती पिला माने चिड़ांती बुलिंग माने छोट छोट गुंडामी माने गुंडा मानकर नोबड़ा वर्षन ये छोट छोट गुंडामी जो करा हुए क्लासरूम रे एटा पिला मानको नेगेटिवली अफेक्ट करे हां बाडेवा चिड़ेवा all true learning is based on dash all true learning is based on dash competition purpose grades school
all true learning is based on what? Competition, purpose, grades, school. Negative word है ये. ग्रेड मार्क रैंक एटा पिला को एक्सटर्नली मोटिवेट करे. ट्रू लर्निंग इज ऑलवेज पर्पसिव इन नेचर. ऑल ट्रू लर्निंग इज बेस्ड ऑन पर्पस. आंसर बेटर पर्पस हो. यस ओके चलो क्वेश्चन नंबर 20. Since classroom normally means a group the teacher adopts. In classroom normally means a group. Classroom not a group. Teacher it कौन करेगा? Learner centered approach, ना group centered approach, ना individual centered approach, ना organization centered approach. अपनेगा teacher it को approach अपनेगा. क्लासरूम ना जेहेतु नॉर्मलिटी लिखा है ग्रुप मेंशन करा है. यदि ग्रुप मेंशन करा है तो टीचर ग्रुप सेंटर अप्रोच करा है. यदि ग्रुप मेंशन होता है पछ कथा टीचर शुड अप्लाई ग्रुप सेंटर अप्रोच. यस पर्पस आउ ऑब्जेक्टिव थिबो. पर्पस टा बेटर देन ऑब्जेक्टिव. Where the size of the classroom is more, the method of teaching is likely to have. जोटे साइज ऑफ क्लासरूम रे अधिक को मेथड बढ़िया काम देव. क्लासरूम साइज अधिक थिले आम से टीचर लेक्चर काम देव. यस लेक्चर इज बेस्ड ऑन द क्लासरूम साइज इज मोर. ओके स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर कंडक्टेड. स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो करा जाए टू कंपेयर एंड रैंक टेस्ट टेकर इन रिलेशन टू वन अनदर. प्रायतः यहाँ हुए टू डिटरमाइन लोकल स्टैंडर्ड. यहाँ टीचर मेड टेस्ट हुए टू मेजर ओनली इमोशनल एबिलिटी. कहीं टू एग्जामिन ओनली रिटन एबिलिटीज. ओनली रिटन एबिलिटीज कहबनी. आंसर ए हम. रैंक करा जाए रैंक आसे मार्क आसे कंपैरिजन आसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे. आंसर बे ए हो बेटर. AAL स्टैंड्स फॉर. एटा काली भी कहितला उथरे बोधे. हां AAL कहले हम कोन कहचे असेसमेंट एज लर्निंग. बी अब आंसर एटा कोन. Although ICT and multimedia are very good resources for learning, but teachers use it in a limited way. ICT multimedia बहुत बढ़िया यूज करिया पे टीचर आपको लिमिटेड वे यूज करसन. काहे खर्च पड़ तो पैसा पड़ुची अधिक ना. एटा लेस एंगेजिंग तो जमा नुह. पिला अधिक एंगेज होती इठी लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ अटेंडेंस परसेंटेज कमी जीवो. हैम्परिंग द मोड ऑफ कम्युनिकेशन ना अधिक खर्च पड़े. कॉस्टली अफेयर्स बोली खर्च पड़े बोली समझते यूज करते. गवर्नमेंट तरफ 5T स्कूल है सब क्लास को जगह दिया नहीं. Which of the following test is used to identify the learning difficulties? D for difficulties, D for diagnostic. कौन अच्छे चलो केते ठीक भूल कर कमेंट दे दे पिला माने. स्क्रीनशॉट नहीं जाई था आंसर दबो. हाँ जदि भल लगे गोटे गोटे लाइक कर दियो पिला माने एवरीबॉडी. महाशिवरात्रि ऑफर चली पिला माने सब बैच पर प्राइस ड्रॉप होती. 5594 कोड को अप्लाई करेंगे. बही रे टेस्ट सीरीज रे एनी बैच कौन सी बैच आप परचेस कर सब बैच रे प्राइस डाउन अच्छे है. आप नहीं पारे कौन सी बैच. OTET बही प्राइस भी कमी जाए 360 टका हो जाए. 5594 एस कोड अप्लाई करके जॉइन द बैच. RI अंगनवाड़ी सुपरवाइजर 17 जनवरी स्टार्ट हो बैच. मैथ बैच मान सार सहित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बुकलेट जापर घर को आप बुकलेट पड़ेगा. OPSC PGT SSB PGT आफ्टर इलेक्शन माने जून मास मोस्ट प्रोबेबली. SSB PGT इलेक्शन डेट डिक्लेयर होला जना पड़ो. तेणु टिके देखा पड़ो है.
15 फेब्रुआरी रे कौन बैच स्टार्ट हो ओडिशा एसएसबी टीजीटी बैच मैंने जॉइन हो पारे एग्जाम तो अपन डिक्लेयर है ठीक अच्छे लास्ट आप गोटे छोटिया थर दे मो तरफ इट इज आवर एटीट्यूड एट द बिगिनिंग ऑफ ए डिफिकल्ट टास्क व्हिच मोर देन एनीथिंग एल्स विल अफेक्ट इट्स सक्सेसफुल आउटकम प्रथम तो कौन गोटे कम जो आम स्टार्ट कर एटीट्यूड ही इंपोर्टेंट हाँ मोर एटीट्यूड जब पॉजिटिव फिर आगू जी हाँ एटीट्यूड नेगेटिव मुझे पारिनी करें तो मुझे पढ़े पारे तो जो होमवर्क देली होमवर्क आंसर कमेंट सेक्शन में जनइबे थैंक यू सो मच पे फॉर बीइंग इन द क्लास सेशन गोटे लाइक करिए आर क्वेश्चन गुड़ा प्रायः आप्लिकेसन डाउनलोड हो आप डाउनलोड हो देखिए डिस्क्रिप्शन लिंक रे आप थी आड़ आप थी डाउनलोड करना डाउनलोड करूँ क्लास केन भल लगे खराब लगे कमेंट सेक्शन में जनइबे थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ।